Assalamu alaikum. I'm Ahmed Naqvi and you are watching World in Focus with Ahmed Naqvi. नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट सीरीज़ के हवाले से बात करेंगे। लास्ट बेसिक कॉन्सेप्ट की सीरीज़ में हमने बात की थी पावर के ऊपर और हमने डिफ़ाइन किया था व्हाट इज़ पावर और हमने उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर बात की थी। नाज़रीन, आज जो हम मेन बात करेंगे दैट इज़ ऑन द टाइप्स ऑफ पावर। अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो उसके अंदर पावर की हिस्टोरिकली स्पीकिंग या क्लासिकल सेंस में दो डेफिनेशन की जाती थी। एक को हम कहते थे हार्ड पावर और दूसरे को सॉफ्ट पावर। बट हमने देखा कि इन रिसेंट टाइम्स देयर हैज़ बीन एन एडिशनल एस्पेक्ट ऑफ पावर एज वेल विच इज़ कॉल्ड द स्मार्ट पावर कॉन्सेप्ट। सो वन बाय वन हम आज तीनों की बात करेंगे, बट बिफोर वी मूव ऑन टू दैट हम उससे पहले फिर बात करेंगे व्हाट इज़ पावर इन इटसेल्फ। और अगर मैं यहाँ पे जोसेफ नाई की डेफिनेशन की बात करूँ कि जोसेफ नाई क्या कहते हैं, जोसेफ नाई defines power as the ability to influence the behavior of others to get the outcomes that you want. So, Nazin, in other words, जो power है, it is an ability, it is that ability through which we try to extract our interest by manipulating, by influencing the others, their decisions, their actions, and their behaviors. Now, power has three main, types, three main kinds of it. The first one being the soft power. Now, in soft power term जो है, it was coined by Joseph Nye in 1980s, जो वेल नोन थियरिस्ट हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। और जोसेफ नाई ने सॉफ्ट पावर का जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया था दैट वाज द आइडिया दैट हाउ स्टेट्स इट इज़ दैट पावर through which states use non-coercive means, non-aggressive means to achieve to achieve their own interest and to influence others. Obviously, Nazreen, when we say non-coercive means, I mean they would be non-violent means, and many scholars have debated on the different aspects and different types of the soft power itself, but broadly it includes the use of media, the propaganda. It also means the use of religion. It also means the use of power of persuasion, communications. Obviously, it also means the power of diplomacy, religion, so on and so forth. सो कहीं ना कहीं पे हमने देखा कि नाज़रीन हिस्टोरिकली डिफरेंट स्टेट्स जो हैं वो उन्होंने ये डिफरेंट सॉफ्ट पावर टूल्स इस्तेमाल किए इन ऑर्डर टू अचीव देयर इंटरेस्ट एंड इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द अदर स्टेट्स। इसकी बहुत सी एग्जांपल दी जा सकती है नाज़रीन। फॉर एग्जांपल, हाउ द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन यूजिंग इट्स मीडिया, इट हैज़ यूज्ड मीडिया ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। हमने देखा कि जो हॉलीवुड है, हाउ इट क्रिएटेड अ परसेप्शन अबाउट द सोवियत यूनियन और कम्युनिज्म इन जनरल, और particularly how it created a soft image of the United States and the Western allies. Despite the fact that we have seen historical brutalities committed by some of the American actions, particularly in Vietnam, but it was American media that actually tried to influence the world opinion. They tried to influence the policies of other states by projecting a soft image of the United States and its allies. इसी तरीके से हमने देखा कि मीडिया की जो वॉर है वो आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाउ मीडिया इज़ बीइंग यूज्ड बाय बहुत से स्कॉलर्स के नज़दीक न्यू imperialist powers to manipulate and influence the others' opinions, decisions. India is an example how India is using its Bollywood, the media, to influence the other powers and develop their perceptions about India and obviously the adversities of India. So besides media, अगर मैं बात करूँ सॉफ्ट पावर की, तो it is also about the diplomatic skills. Sometimes the diplomatic skills, the diplomats that state has, they are well versed in the art of diplomacy, and they have the communication skills. They have set of skills that are very critical and that are very important in developing the influence of a state with other states. So diplomatic skills, communication skills, the power of persuasion of the diplomats, all of these factors contribute towards the soft power thing. Another is नाज़रीन, जैसे रिलीजन की हमने बात की, रिलीजन इज़ अनदर फैक्टर जो कि सॉफ्ट पावर का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। स्टेट्स यूज रिलीजन टू इन्फ्लुएंस द अदर्स, एंड ऑब्वियसली इस सेंस में अगर बात की जाए तो पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल हाउ पाकिस्तान हैज़ बीन यूजिंग द आइडिया ऑफ मुस्लिमनेस इन ऑर्डर टू गेट द सपोर्ट फ्रॉम द ओआईसी मेंबर्स ऑन इंपॉर्टेंट इशूज़, पर्टिकुलरली ऑन कश्मीर। सो इसी के से बहुत सारी और स्टेट भी हैं जो रिलीजियस इन्फ्लुएंस को यूज़ करती रही हैं टू गेन द इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ अदर्स इन मैनी डिफरेंट केसेस। सो इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। अब हम आते हैं सेकंड काइंड ऑफ पावर विच इज़ हार्ड पावर। हार्ड पावर, ऑब्वियसली नाज़रीन, इन कंट्रास्ट टू सॉफ्ट पावर, इट मीन्स व्हेन अ स्टेट अचीव्स पावर यूजिंग coercive means. And when we say coercive means, it can include two kind of coercive means, either military or economic.
So, for example, if a state has hard power, it means that it has the military capabilities through which it can influence the decisions of others. It can threaten, or it can develop alliances, or it can, use other kind of military proxy wars. It can use other kind of military techniques in order to influence the decisions of others. सो हमने देखा कि इस हवाले से रिसेंटली जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो रशियंस हैव थ्रेटन पोलैंड दैट इफ इट ट्राइज टू एंटर इनटू बेलारूस तो रशियंस विल यूज ऑल द मीन्स एट इट्स डिस्पोजल टू रिटेलिएट टू दैट विच वाज अ क्लियर रेफरेंस टू द मिलिट्री हार्डवेयर capability that Russia has and particularly the nuclear capability that Russia has. So कहीं ना कहीं पे states अपनी military capability को project करके military threats को project करके they try to influence the others' decisions, their actions, etc. बट इसी के से नाज़रीन हार्ड पावर का जो सेकंड एलिमेंट है दैट इज़ द इकोनॉमिक कोरिजन ऑब्वियसली स्टेट्स आल्सो यूज द थ्रेट्स ऑफ सैंक्शंस एम्बार्गोज ब्लॉकेट्स इन ऑर्डर टू इन्फ्लुएंस द डिसीजंस ऑफ अदर्स हमने देखा कि ये एम्बार्गोज यूज़ किए गए बाय अमेरिकन अगेंस्ट द इराक इन 1990s जो फर्स्ट गल्फ वॉर थी हमने देखा कि द सेम अमेरिकन सैंक्शंस वर यूज अगेंस्ट सो मेनी स्टेट्स ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस दैम और हमने देखा कि इस हवाले से जो अमेरिकन और वेस्टर्न सैंक्शंस ऑन लीबिया थी दे वर्कड अल्टीमेटली व्हेन लीबियन मोहम्मद कज़ाफ़ी वाज अल्टीमेटली फोर्स्ड टू अबैंडन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम सो कहीं ना कहीं पे हार्ड पावर जो है वो इकोनॉमिक सैंक्शंस के थ्रू इट कुड बी थ्रू इकोनॉमिक इंसेंटिव्स इट कुड बी थ्रू मिलिट्री थ्रेट्स मिलिट्री अलायंसेस ये हार्ड पावर भी अचीव की जा सकती है बट दिस इज़ मोर अबाउट द एग्रेसिव एंड कोअर्सिव मोड ऑफ पावर यूजली नाजरीन ये जो दो काइंड ऑफ पावर्स हैं सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर दे रिप्रेजेंट देयर रिस्पेक्टिव kind of ideological paradigms, the liberal paradigm and the realist paradigm respectively. Let's come to the third and last part of power, which is third type and last type of the power, which is the smart power. Now, in smart power is an idea that says that the states don't need to brutally use the hard power, or they should solely rely on the soft power. Rather, their policies should be a mixed projection of the soft as well as the hard power. So in other words, we can say that the smart power is a synthesis between hard and soft power to make it more effective and to make it more result oriented. So soft power is actually a mixed recipe, a smart set of choices from hard power and soft power in order to make sure that state is successful in achieving its own objectives. Obviously, Nazeen, the smart power is the smart idea on the part of many powers. So states use what we call the carrot and stick, the punishment and rewards, the both soft and hard powers, trying to influence others because it just like we have the modern concept of the hybrid war involving different spectrum of threats or warfares. इसी तरीके से जो smart power है, it is a broad spectrum of the hard and soft elements in order to make sure that a state is actually and certainly able to influence others. So in other words, हम कह सकते हैं smart power is more like an opportunistic, it's more like a utilitarian idea. So whatever the means doesn't matter. What matters is how you are able to achieve the impacts. So to conclude, Nazeen, हम कह सकते हैं that the power is an important concept of international relations. Its types are important, and obviously over the period of time, states have evolved in making sure that they use that type of power which is more effective. Soft power was a liberal idea, hard power was a realist idea, but in the post-Cold War, we have seen the rise of this idea of smart power because the fall of the Soviet Union, it gave us an impression that hard power is not enough in states' capabilities. The use of the soft power is also not enough for the capabilities. So what actually is needed is the smart calculation of both hard and soft powers. Thank you so much, Nazeen, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe to this channel. Allah Hafiz.